हेलो फ्रेंड्स, कियारा किचन में तमारा बधानुं स्वागत है। आज આપણે दूधमांथी पनीर बनावशुं। तो अहींया तपेलीमां मैं 2 लीटर दूध मूकेलुं छे गरम करवा माटे। तो हवे गरम थाय એટલે આપણે એને પનીર બનાવશું। તો दूध આપણું ગરમ થઈ ગયું છે। હવે આપણે એમાં 2 લીંબુનો રસ નાખશું। तो गरम दूध में आपणे લીંબુ नाखी दीधेलुं छे। हवे एने चमचीनी मददथी आवी रीते आपणे हलावशुं एटले आपणुं दूध एकदम फाटवा लागशे अने पनीर बनवा लागशे। हवे दूधने आपणे धीमे धीमे हलावशुं आवी रीते एटले एमांथी पनीर एकदम छूटुं पड़वा लागशे। तो पनीर आपणुं रेडी थई गयुं छे। हवे आने आपणे एक कपड़ामां गाળી लेशुं। હવે આપણું આ પનીર રેડી થઈ ગયું છે। હવે આને આપણે સરસ રીતે ધોઈ લેશું। ધોઈ લીધા પછી પાણી એનું એકદમથી સરસ આવી રીતે પોટલી વાળી નિતારી લેશું। હજી એકવાર આપણે આને ધોઈ લેશું। ने बीजी वार सरस रीते पाछुं धोई लेशुं एटले લીંબુનો जे खाटो स्वाद छे ए वयो जाय। हवे आने एकदमथी सरस मजानी पोटली वाળી कड़कथी आनुं बधुं पाणी आवी रीते आपणे नितारी लेशुं। आवी रीते पोटली वाળી सरस मजानी आवी रीते आपणे एनुं पाणी नितारी लेवानुं छे। पाणी नितरी जाए पछी आवी रीते हाथेथी एने थेपी वजनवाળી कोई वस्तु मूकी अने 1-2-3 कलाक माटे फ्रीजमां मूकी देवानुं એટલે આપણું પનીર આ 500 ગ્રામ જેટલું બનીને રેડી થઈ ગયું છે 2 લીટર દૂધમાંથી।